चलो टुडे वी आर गोना लर्न व्हाट इज टेराफॉर्म। एक वीडियो में पूरा टेराफॉर्म कंप्लीटली फॉर बिगिनर्स, वन शॉट वीडियो, मज़ा आने वाला है। और आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की मैच है सुपर 8, मुझे वो देखनी है। चलो लेट अस बिगिन विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टेराफॉर्म। अभी सीख लो फिर मैच देखेंगे। सो व्हाट इज टेराफॉर्म? टेराफॉर्म इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल। मतलब से नाम से क्या पता चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टू मैनेज योर एंटायर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ कोड, सो दैट हमको डायरेक्ट जाके बाई ना करना पड़े, बाई सर्वर्स। आप सिर्फ अपना एक कोड रन कराओ और पूरे सर्वर्स बन जाए। इसकी इंपॉर्टेंस दिखाऊँ। सपोज नेटफ्लिक्स पे एक शो स्ट्रीम हो रहा है, सडनली पूरा नेटफ्लिक्स क्रैश हो जाए। नेटफ्लिक्स पे देर आर अराउंड मिलियंस ऑफ सर्वर्स, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स दैट आर रनिंग। सडनली वो क्रैश हो जाए। अब आपको नए सर्वर्स बनाना है, तो आप क्या करोगे? क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू, कितनी बार करोगे? विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म आपको सिर्फ एक कोड रन कराना है एंड यू कैन क्रिएट 50, 100, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर एट द सेम टाइम। वो पूरा क्लाउड इकोसिस्टम, बहुत कुछ आता है क्लाउड इकोसिस्टम में। EC2, S3 बकेट्स, लोड बैलेंसिंग, DNS, फिर डेटाबेसेस, सबको मैनेज करना, बहुत कुछ। सो सब हम मैन्युअली नहीं कर सकते। सो टेराफॉर्म विच इज़ यूज एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, ये सब मैनेज करता है सच दैट कि कुछ भी क्रैश हो जाए, जस्ट रन योर कोड। जो हम सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट योर EC2 इंस्टेंस विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म कोड। दैट्स द पावर ऑफ टेराफॉर्म। बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड दिस इज गोना बी आवर कोर्स आउटलाइन। यस, चलो पहले तो कोर्स आउटलाइन समझ लेते हैं, सब्जेक्ट अभी क्लैरिटी 100x हो जाए, then we'll start learning the Terraform commands. Also, you already have learned what is Terraform, so आप बहुत आगे हो from the people who are just scrolling, wasting time. आप बहुत आगे हो, but future बहुत bright है because you are investing your time into learning skills and everything. So I'm proud of you. Let us learn. Okay, then let us begin our video. Let me open my notes. See, you can find the notes here too in the description. Here is the link. Terraform one shot. Okay, these are my notes. Very valuable, very structured. Let us download it and open it. Cool. See, you already learned what is Terraform, so you are very ahead. Let us move further. See, Terraform word का meaning क्या होता है? Terraform means changing a planet's habitat atmosphere so that humans उसमें रह सके. Terraform का मतलब ये होता है, actual word का meaning. Like Elon Musk is trying to change the Mars atmosphere so that humans can live there. So for DevOps, which is a Terraform tool is a DevOps tool, right? So Terraform means making the environment, the cloud, the service more habitable for our project by managing everything as code. That's the meaning of Terraform in the world of DevOps. Cool, right? See, चलो, now let us learn the commands. इतने ही कमांड है, इसमें से भी 4 ही कमांड इंपॉर्टेंट है: init, plan, apply and destroy. So let us learn that. Just write Terraform init. For this you have to set up Terraform first. वो मैं दिखा दूंगा, चिंता ना करो. So see, we start with Terraform init. वो करता क्या है, जो भी सारी dependencies required है Terraform की, which we required in order to run Terraform, by executing Terraform init, it installs every dependency required for us to run the Terraform. Okay, then ये मैं बाद में कराता हूँ. Then the command is Terraform plan. ये इतनी बेहतरीन कमांड है that without even applying it, you can see that कोई errors ना आए. You can check कि मेरा code how it's gonna execute it, like how it's gonna execute it, what will be the output without even actually changing the resource. देखो deployment में होता क्या है कि that हमारा servers पे code is already running, so we have to first check it that it doesn't crash, कि कोई error ना आए और पूरा server को crash ना कर दे. That's why this command is very useful. Terraform plan. It executes the entire Terraform file without even changing the resources. और हमको output दिखा देता है. It might make error, but it's a very useful command. And then Terraform apply to actually
apply the execution. Basically अगर हमको EC2 बनाना है तो we with the help of code we do Terraform init, then Terraform plan. ये वो आउटपुट दिखा रहेगा कि अच्छा इतने EC2 इंस्टेंस ऐसे बनेंगे. Then after we apply it, the EC2 instances are actually created on the AWS account. What is EC2 instance? EC2 instance is basically a server, a cloud servers which you can rent by the hour. It's given by AWS. EC2 भी बहुत powerful है. So after we apply it, actual EC2 instances are created. And if you want to destroy what we just created, delete everything, just write one command. And Terraform ने जितना भी infrastructure बनाया है, बहुत कुछ EC2, S3, RDS, VPCs, load balancing, with the help of सिर्फ एक ही command, it's all will be destroyed. So these were only 4 commands you need in order to understand Terraform. Now next step would be how to write it so that we can create our infrastructure with the help of code. It would be the file and its code. So that's the next step we're going to learn. Also, Terraform format, what it does, see, we write the Terraform in HCL, HashiCorp language. So with the help of FMD, it just properly formats everything. सब एक structure बना देता है such that it's readable और Terraform के लिए it's better to understand. And Terraform validates means checks and gives errors if any. एग्जीक्यूट होने पहले ही इट चेक्स सच दैट कोई एरर हो तो आप सॉल्व कर दो सच दैट मेरा रिसोर्सेज वेस्ट ना हो इन एग्जीक्यूटिंग एंड फेल होने में. बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान, देन अप्लाई एंड डिस्ट्रॉय. कूल. नाउ लेट अस लर्न इट द टेराफॉर्म फाइल्स. बट एक ज़्यादा देखो, यू डोंट इवन हैव टू राइट ऑल दिस फाइल्स एंड एवरीथिंग. क्यों? Because on the Terraform registry, there are so many inbuilt modules that makes writing Terraform code very easy peasy. दिखाऊं कैसे? See, search Terraform registry जहाँ पे सब saved है and registry modules. Browse modules. See, suppose हमको AWS में EC2 instance बनाना है. देखो, this many modules are there which makes our life very easy. You don't have to write anything. डॉक्यूमेंटेशन पे से कॉपी करो. दिस आर ऑफिशियल टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशंस. इधर से कॉपी करो एंड देन मेक योर चेंजेस एंड इट्स डन. एज सिंपल एज दैट. IAM, S3 bucket, VPC, EKS, security group, Lambda. बट मोनिल ये सब क्या है? दिस आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय AWS. बहुत ही भाई, लिटरली आई एम इन लव विथ AWS क्योंकि द थिंग्स इट कैन डू, क्रेजी भाई, क्रेजी, बहुत ज़्यादा क्रेजी. See, so if you want to learn AWS too, let me know in the comment section and I'll create a dedicated AWS series. Cool. ये सब इतने ज़्यादा powerful tool है, Lambda, EKS, VPC and everything. Crazy. So yeah, we want to create EC2 instance. Where is EC2 module? Yeah, here it is. See, here are the files which help us create the EC2 instance. Instance type. Okay, हम आएंगे इस पे. Let us continue our lecture. Terraform files. Terraform में इतनी टाइप की अलग अलग फाइल्स आती है इन विच यू राइट योर कोड. जब मैंने सीखा था तो देन नोबडी टोल्ड मी दैट ये फाइल आती है और ये क्या क्या करती है. सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड इट. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, main.tf. सारी टेराफॉर्म फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .tf. ओके, सो main.tf ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है. दिस फाइल योर एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, जो भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसका जो भी कोड है, इट्स रिटन इन द main.tf फाइल. पहले मैं हाईलाइटेड वन सिखा देता हूँ क्योंकि दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. देन सब 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 बाद में सारे सिखा दूंगा. ओके, देन कम्स द variable.tf. variable.tf क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू क्रिएट अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोड. इसमें आप अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दो. सी, सिर्फ डिफाइन करना है. terraform.tf vars फाइल में we will give the actual value of the variable. Just define all the variables in the variable.tf file. फाइल्स आएगी, मैं दिखाऊंगा आपको. चल let me show you right now only VS Code. This is a practical we are going to perform. See, this is the main.tf file. अभी syntax पे मत जाओ, just understand what it does. See, this file, what it does, resource, it creates an EC2 instance, T2 micron type. How many? 5.
With this code, you can create 5 EC2 instances just by executing one command only. Terraform apply, that's it. This is the main.tf file. This is the variable.tf file. See, in this, we have only defined what the variables will be. See, variables का काम बहुत important होता है. It makes our code reusable, so that आप सिर्फ variables की value change करो और आपका पूरा code change हो गया. That's the value of a variable. See, we just defined what are the variables. Variable AWS region, उसका description, उसका type, उसका default value. Variable 2, project name, description, type, default value. Now, अब इसकी मुझे एक्चुअल वैल्यू देनी है. दैट AWS region की एक्चुअल वैल्यू ये है. So then it is defined in the .tf vars file. See, AWS region हमने डिफाइन कर दिया ये रीजन एंड उसके वैल्यू है US East 1. ये अलग अलग फाइल्स क्यों है? इट हेल्प अस टू क्रिएट अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइल. कि आपको main.tf में कुछ भी चेंज नहीं करना है. वी जस्ट हैव टू यूज आवर वेरिएबल्स. See, we are using the variable here. See, var dot AWS region. So it will first check in the tf dot variable dot tf file कि अच्छा ये defined है and उसकी value ये है. This helps us to create a modular structure of a code. Get it? Okay. Then next important file is the terraform.tf state file. ये फाइल क्या करती है? See, in DevOps everything works on automation. सब ऑटोमेशन पे चलता है. वी डोंट इवन डू एनीथिंग, वी जस्ट पुश आवर कोड टू गिटहब और सब ऑटोमेटिक हो जाता है. तो सारे टूल्स को कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये रिसोर्स बन गया है और ये करंट स्टेट है. तो दैट फाइल की करंट स्टेट ये है, ये अभी चल रहा है, ये रिसोर्स बन गया है, वी डिस्ट्रॉयड दिस. एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दिस फाइल terraform.tf state file. Basically it stores the state of our infrastructure. Very important. अगर ये ना हो तो सारे टूल्स कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर कि अच्छा कौन से स्टेज पे है हम. और ये सब ऑटोमेशन पे ही होता है. वी डोंट हैव टू क्रिएट दिस. दिस इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन वी डू terraform apply. All the data of the infrastructure is stored on this file, and as it's a very important file, इसका एक बैकअप भी क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली. बैकअप ऑफ द tf state file, so that if this is lost, your entire details upon the infrastructure is lost. तो उसका बैकअप फाइल भी खुद ही बन जाता है. Then comes the backend.tf file. ये क्या करती है? Stores the state file remotely for CI/CD. This is very important file. तो हम we cannot lose it. तो उसका बैकअप भी बनता है and we also stored it in some servers S3 buckets so that it's not lost. Backend.tf stores the file remotely on S3 buckets so that it's not lost. Cool. Now next file are the provider.tf. It provides the detail about कि कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर है हमारा. AWS है, Azure है या गूगल क्लाउड है. We learned what is variable.tf, defines the variable, और उसकी actual value is stored in the tf.vars file. Output.tf, ये फाइल क्या करती है? अगर we have to print some output in the console only, like IP of the infrastructure, EC2 instance जो हमने create किया उसका public IP, it's stored in the output.tf file. TF state stores all the infrastructure data, उसका backup, and this is a very important file, so it's stored in the back remotely with the help of backend.tf. Version.tf, control required version needed to run and create the cloud resources. Terraform log.ht, auto-generated log provider version, ensuring consistent setup. It logs the provider version such that एक consistent setup हो. बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फाइल्स है main.tf, जहाँ पे हमारा पूरा कोड एग्जिस्ट करता है. main.tf, यही हमारा प्रैक्टिकल है. दैट वी आर गोना क्रिएट 5 EC2 इंस्टेंस ऑन AWS विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोड. हम जस्ट रन करेंगे और 5 EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली वुड बी क्रिएटेड. दैट्स द पावर ऑफ AWS एंड वी आर गोना डू इट. पहले सीख लो. सी यू ऑलरेडी लर्न व्हाट इज टेराफॉर्म, उसकी कमांड, सारी फाइल्स. नाउ लेट अस लर्न हाउ टू एक्चुअली राइट दिस सो दैट यू कैन एक्चुअली राइट इट एंड फिर we will practically demonstrate it with the help of just running the command, और आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा. Okay, Terraform syntax. Let us learn the Terraform syntax now, for which, see, this is just a basic anatomy, but I have created a file just for you कि आपको अच्छे से समझ आ जाए.
syntax and how to write a Terraform file.pdf. Let's download it and open it. Okay, so इतना मास्टर कर दो and you can confidently say कि आपको Terraform आ रहा है ना, I know how to write Terraform file. समझ लो, if आपको नहीं भी समझ आता then don't worry, we have modules, inbuilt modules which makes your task very easy. यही है documentations and आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है कि भाई ये सब मैं कैसे लिखूंगा. We have documentations, use it, change it. एज ए डेवलपर इंजीनियर आपको ये आना चाहिए कि ये फाइल्स करते क्या है, व्हाट इट डज, और अगर मुझे कोई चेंज करने को बोले तो देन आई कैन डू इट कॉन्फिडेंटली. Okay, so now let us learn how to write the syntax. This is the basic anatomy of any block. Terraform is written in HCL. HCL में सब कुछ are block. See, what are blocks? How to write a block? Everything in Terraform is organized in block. A block is a container for other content and usually represent a configuration of some kind of object like virtual machine or a network. Here is the general structure of a block. सब block है in Terraform and how to write this block? Block type, उसको लेबल करना, लेबल 1, लेबल 2, एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, चिंता चिंता नॉट. आर्ग्यूमेंट का नेम और उसकी वैल्यू क्या है. लेट अस फर्स्ट लर्न व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लॉक, क्या लेबल करते हैं, देन व्हाट वी एक्चुअली वांट टू क्रिएट इज रिटन इन द कर्ली ब्रेसेस एंड द आर्ग्यूमेंट. सी, देखो एक एग्जांपल दिखाऊं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक, द रिसोर्स ब्लॉक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ब्लॉक टाइप रिसोर्स विद लेबल, बेसिकली लेबल 1, लेबल 2, आर्ग्यूमेंट की नेम और उसकी क्या वैल्यू है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी लर्नड हियर, द जनरल स्ट्रक्चर. कूल, समझ आ गया. ओके, नाउ लेट अस लर्न द ब्लॉक टाइप्स, देन वील अंडरस्टैंड द जनरल स्ट्रक्चर. फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि हाउ इट्स एक्चुअली रिटन एंड देन वी विल सी अ प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन. कूल. आई नो इट माइट सीम्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो ये सब HCL एंड एवरीथिंग, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर यू कीप प्रैक्टिसिंग इट फॉर एन ईयर मे बी, फिर आपको सब ये सब नॉर्मल लगेगा कि अच्छा ओके, ये तो मुझे आता है भाई, मॉनल ने सिखाया था, मुझे आता है. और अगर आपको कोई भी डाउट हो और आपको वापस देखना है तो देन जस्ट कम टू द चैनल एंड वॉच इट अगेन. ये कहीं नहीं जा रहा एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड द नोट्स फॉर यू, सारे टूल्स की नोट्स सब कुछ. सो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है, चिंता ना को. ओके, सो नाउ लेट अस लर्न द ब्लॉक टाइप्स. इतने 4 टाइप्स के ब्लॉक आते हैं एंड देन कम्स द रिसोर्स के क्या बनाना होता है. ओके, सो लेट अस लर्न द फर्स्ट block which is the Terraform block. Any Terraform file starts from the Terraform block. Terraform block उसमें required providers कि हम कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं. AWS है, Azure का है और गूगल क्लाउड है. रिक्वायर्ड प्रोवाइडर AWS, सोर्स HashiCorp AWS और उसका वर्जन. दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक. This block configure Terraform itself so that it's specify which cloud provider we want to use in order for Terraform to run. Next block is the provider block. हमने डिफाइन कर दिया कि मुझे AWS चाहिए एज क्लाउड प्रोवाइडर. नाउ क्लाउड प्रोवाइडर की डिटेल्स कि मुझे किस रीजन में बनाना है. US East 1, AP South 1. AP South 1 is the region of Mumbai. अगर हमको इंडिया में सर्वर्स बनाना है with the help of AWS, we use the region AP South 1. Terraform हमने कॉन्फ़िगर कर दिया. We defined what the provider details is, cloud provider details. Now comes the most important block, that is the resource block. चिंता मत करो, आई नो इट माइट सीम्स ओवरवेलमिंग कि भाई ये सब क्या हो रहा है. वॉच द वीडियो वंस अगेन और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे एवरीथिंग वुड बी क्लियर. मैंने भी जब सीखा था देन इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी कि तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. बट नाउ आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिस करते करते, learning how to write it, how to teach it, it's normal now. Cool. So now next comes the resource block, the most important one. इसमें डिफाइंड होती है that what we want to create as infrastructure as code. ब्लॉक टाइप रिसोर्स, लेबल कि मुझे AWS का EC2 इंस्टेंस बनाना है और उसका नाम कि माई वेब सर्वर्स से विल क्रिएट दिस रिसोर्स का नाम, so that if you want to access it again then just use the resource name and you can access it again in the file. Argument name, argument value, this is the basic block we studied. Block type resource, label 1 we want to create AWS instance, resource का नाम my web service,
argument name, AMI, and its value. See, these are the terms of EC2 instance. कि मुझे कौन सा टाइप चाहिए, मुझे कौन से टाइप का EC2 इंस्टेंस चाहिए. इफ इट डजंट मेक सेंस राइट नाउ, इट्स ओके. जस्ट प्रोसेस को समझो कि अच्छा वी आर क्रिएटिंग एन EC2 इंस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके. अगर आपको डेडिकेटेड AWS पे सीरीज चाहिए देन लेट मी नो इन द कमेंट्स और मैं बना दूंगा. चिंता ना, आपका भाई बैठा है. देन द टैग्स, ये टैग है माई वेब सर्वर एंड दिस रिसोर्स ब्लॉक इज ओवर. Fourth and the final block is the variable and output block. Let you pass values in the configuration so that you don't have to hard code it. But we don't use this block. क्यों? क्योंकि we create our own variable.tf file और उसकी value are stored in the .tf vars. But you should know that this block also exists. अगर आपको same file में ही बनाना हो तो. An output block क्या करते हैं अगर we want to print an IP address of our EC2 instance in the console to access it, then we can print it in the console only with the help of output block. These were the only 4 block. So maybe सबसे ज़्यादा important is the resource block और वो आपको आ गया है. When we will see the practical demonstration, we will write the block by block too. This is the HashiCorp HCL language, the curly braces with the indentations, then going further deep down inside it, here, and here, and then the closing the curly braces. Chinta not, we have the modules ready to use. Just change it and it's yours. Or we also have AI. So write a basic boilerplate and then just make your changes and all set. So we learned the basic anatomy, the block. Now, these are the extra rules that if you want to use the comments, you can do this with the help of hash, single line, multi-line, string numbers. This is a string, and booleans. We do not need any quotes. We can use list, Python list, and map with the help of this syntax. And agar we want to reference any other resource, we can done with the help of where dot. See, I created this variable AWS region. उसकी वैल्यू मैंने स्टोर की AWS region US East 1. And if I want to access it, see here I am accessing it with the help of where dot AWS region. Where dot फिर वेरिएबल का नाम. होने लगी तो बहुत सारी फाइल है इन वेबसाइट बिल्डिंग. पता है हमको HTML में CSS लिंक करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में सब लिंक करना पड़ता है. Do we have to link everything? No. When you do Terraform apply, Terraform reads entire your directory, पूरी डायरेक्टरी रीड कर देगा और जो भी फाइल का एक्सटेंशन ends with .tf, it will scan automatically सारे फाइल्स. So we don't have to link anything. ये मेरा डाउट था. So I researched on it and I found that no, we don't have to link anything. Like we have to link HTML, CSS and everything. So it reads the every file .tf and yeah, congratulations. You now understands how to write a Terraform file. Chinta not, you don't have to write it from scratch. We have modules. Even in interviews also, you can confidently use the modules. No interviewer demands that you have to remember everything. But आपको पता चलना चाहिए कि what everything does. That's why I explain the syntax, block type, label 1, label 2, the argument name, its value, and all of the core block types. Now you can confidently say, I know Terraform, और practice करते करते you will master it. क्योंकि practice के बिना तो कभी कुछ नहीं होता. चलो, so now let us see the practical demonstration. Okay, so in this practical demonstration, we are going to create 3 EC2 instances with the help of Terraform using the EC2 instance module from the official Terraform registry. Module क्या होता है? In Python, we have inbuilt modules so that we don't have to write the entire code. Just use the module and you can create the EC2 instance. We are going to create 3 EC2 instances at the same time with this code. Just Terraform apply and your EC2 instance will be created. Okay, so here is the module I use, module EC2 instance. Okay, so the code समझा देता हूँ. We are never going to write from scratch. We will use this, directly copy, write the boilerplate from the documentation, then directly copy the code. So as you now understand each block, Terraform provider, the resource block, the module, and all the files, main, Terraform variable.tf, tf vars, the actual values, and output to print in the console. So let us understand each file and we'll then execute it. Terraform, the required provider is AWS. And we have, we want to create as modular structure as possible. So we are एक भी value हम directly hard code नहीं कर रहे हैं.
वी आर यूजिंग द वेरिएबल, पहले वेरिएबल डिफाइन किए और उसकी वैल्यू इज इन द tf.vars फाइल. ओके, सो द प्रोजेक्ट नेम रिसोर्स, फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग एन सिक्योरिटी ग्रुप. EC2 इंस्टेंस के टर्म है, डोंट वरी अबाउट दिस. इतना ही है दैट वी आर क्रिएटिंग 3 EC2 इंस्टेंस फ्रॉम इट. अगर आपको ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या है ये समझ नहीं आता, इट्स ओके. व्हाट इज इंग्रेस? Allow this traffic egress from the EC2 instance, allow this traffic to go outside. Okay, it doesn't matter if you don't understand this, let it go. Now comes our main file, which using the help of module EC2 instance from the Terraform registry. Source the website given here. How many variables, how many EC2 instance do we have to create? That's also we are going to take from the variable.tf file. See here, here is the variable defined AWS region, project name, environment, instance count. How many? 3. Instance type, T3 micron. This lies in the free tier of the AWS account, so we are not gonna incur any loss in this. Key name, VPC ID. It's okay. It's okay. These are all EC2 instance term. It's okay if you don't understand this, but with the help of Terraform, we can create entire EC2 instance from zero to production ready. मुझे वही दिखाना था कि that's how powerful it is. Then terraform.tf bars में हमने एक्चुअल वैल्यू एनकोड की है, रीजन AP South 1. AP South 1 मीन्स मुंबई में सर्वर बनेगा. प्रोजेक्ट नेम, एनवायरमेंट, instance count 3. I want 3 instance type would be T3 micro, which lies in the free tier. Key name, what's the key name? It's a key pair used to SSH into your EC2 instance. Let it go, it's okay. VPC ID, I have given my IDs, the allowed CIDR block. This is my public IP so that I can access the EC2 instance and the root volume. This the public IP would be, as I have defined it in the output.tf file, it would be displayed in the console जब apply हो जाएगा. And yeah, this was it. इतना ही समझो that with the help of this file, we are going to create 3 EC2 instances as a code. If you know the details about EC2 instance, जो एक दूसरा पूरा टॉपिक है, एज यू कैन सी बहुत कुछ आया, इंग्रेस, इग्रेस, इंग्रेस, फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स, VPCs, सबनेट्स. तो ये सारे EC2 के कंसेप्ट है, AWS के कंसेप्ट है. बहुत ज़्यादा, एज आई ऑलरेडी सेड, आई एम इन लव विद AWS क्योंकि जो वो चीज़ें कर सकते हैं. डिड यू नो कि जो भी आप बड़े बड़े स्टार्टअप्स, जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, नेटफ्लिक्स, ऊबर, अपने इंडिया में फ्लिपकार्ट, जोमेटो, सब आर बीइंग रन्ड ऑन AWS. दैट्स हाउ पावरफुल इट इज. दैट्स व्हाई आई एम इन लव विद दैट, क्योंकि जो क्रेजी क्रेजी थिंग्स ये कर सकता है. सो या, सो लेट अस, नाउ यू अंडरस्टैंड द फाइल्स. नाउ द 4 Terraform commands, इतना ही है. Let us initialize this. Okay, first, am I in the Terraform file? No, I'm not in the Terraform folder. See, here is, so first let us go in the Terraform folder. Okay, now I'm in the Terraform folder. Let's init it. हमारी 4 कमांड क्या है Terraform की? Init, plan, apply, destroy, and fmt to format and to validate to check errors before executing it. Okay, so let's initialize it. Terraform init. Before this, see, we have to install 2-3 things. क्यों? First we have to install Terraform. अब ये create होगा on AWS, so we have to set up AWS account. अब ये हमारा PC और AWS account is not connected, so we have to configure it so that my PC is connected to AWS. So ये सब हमको करना पड़ेगा in order to run this. चिंता मत करो, I will show you this. I will demonstrate how to install everything, set up AWS account, how to configure your local machine to AWS, and मैं दिखा दूंगा. Right now focus on practical demonstration. With the help of this file, कुछ जादू होने वाला है. We are going to create 3 EC2 instance without even doing anything. The magic of DevOps. Everything on automation with the help of code. Let's initialize it. इतनी फाइल्स हमने डिफाइन की थी. अब जो देखो, वेट अ मिनट, लेट इट डू इट्स जॉब. इधर फोकस करना.
Till it's creating initializing Terraform. Okay, it's done. See, the log.html is created. जब Terraform apply होगा ना, see all the necessary modules. See, modules is sub is being sub initialized हो गया. We didn't have to write anything as we use the EC2 module. It's it's installed in here just by a single command. That's how powerful this is. Now let's format it. Terraform fmt. सिर्फ एक कमांड से ये सब हो गया by importing the module as it's already formatted. Terraform validate to check for some errors. Syntax error. I don't think so I have any. Okay, the configuration is valid. Terraform, let's plan it. What is plan? To execute it without executing it. कि हमको पता चल जाएगा okay, this might happen. Also a quick note, Terraform plan is not that reliable. जो Terraform अप्लाई के बाद होगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि Terraform प्लान और Terraform अप्लाई में सेम रिजल्ट आएंगे, बिकॉज Terraform प्लान अज्यूम करता है कि ऐसा एग्जीक्यूशन होगा. सो डोंट एंटायरली डिपेंड ऑन Terraform प्लान. ओके, Terraform प्लान, it assumes कि चलो when you execute this, see this is the magic of Terraform. when you जब हम सिर्फ एक कमांड लिखेंगे Terraform apply, this many things are gonna be created. A security group, an ingress with the help of EC2 module. It will create, fetch the AMI ID, this many things, the environment, the EBS volume, and so much more. This is just a plan that this might happen. It's not necessarily that exactly this would happen. It assumes that this is gonna happen based on the file, but actually हम तभी देख सकते हैं when we apply it. So our last command is Terraform apply, and कुछ magic होने वाला है with our code. Yes, I want to approve it. This many things are gonna be added. Let's go. Creating the security group, creating the instance. आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा क्रेजी है. With the help of just files we are creating an entire infrastructure. With the help of just files we are creating the next Netflix server, the next Flipkart server, the next Zomato server. See, as we have defined in the output.tf, कि हमको public IP चाहिए. These are the public and private IP and the instance ID जो create हो गई है on my account with just a single command Terraform apply. Let us check it. See, here is my AWS account in the Mumbai region, AP South 1. This is the Mumbai region. Let us check it. EC2. 3 instances are running. Running. We just created with the help of a single command Terraform apply, and it's done. अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है. Basically, these are servers. इसमें हम Netflix चला सकते हैं, अपना Zomato चला सकते हैं. I know it requires many things to create a resilient architecture, solutions architect, a cloud infrastructure, but this is how it's done. And now you know this. एक्साइटिंग है ना भाई, बहुत एक्साइटिंग है ये सब. सी, एज आई टोल्ड, पता है मैंने बोला था कि TF स्टेट मेंटेन्स द स्टेट ऑफ what is creating in the infrastructure. As we apply it, it's created automatically. tf.vars providers, the license, the module, everything is imported. This is the power of Terraform. With the help of just 4 commands, you can do some crazy thing. And with the help of so many modules, you can create basically anything that you want. That's the power of Terraform combined with modules and just 4 commands. Now, we don't even, if you want to delete everything, it's very simple. Terraform, the final command, Terraform destroy, and everything will be deleted. Let it take its time. Yeah, I want to destroy 3 accounts and 1 security group. Delete. Destroying. Still destroying. Let us do its job. तब तक आप बताओ कैसा लगा वीडियो. क्रेजी था ना भाई. Terraform, the power of Terraform. So let me know in the comment, and if you like the video, subscribe.
भाई के लिए तो ना बनता है ब्रो। इंस्ट्रक्शन कंप्लीट आफ्टर 40 seconds. सिर्फ एक कमांड से वी क्रिएटेड एन एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विद अ सिंगल कमांड इट्स बीइंग डिस्ट्रॉयड. Let us do its job. Let me drink some water till now. Okay, destroy is complete. 4 resources are deleted. और चेक कर लेते हैं. See, now it's gone. Nothing is running. No matching instance found. It's the power of Terraform. And yeah, I think so. Provisioners are left to be explained. We understand the syntax, how to create a variable file, and how to it is accessed with the help of var dot. Terraform treats all files as a one big configuration, so we don't have to link it like CSS and HTML. Now comes the provisioner. They are the last resort. मतलब सी हमने EC2 इंस्टेंस तो बना दिया. Now उसमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ना. We have we want to install some dependencies, Ubuntu install करना है and so much more. क्या पता हमको 100 EC2 इंस्टेंस एट द सेम टाइम में उसमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना है. So provisioners are there in Terraform, but they are the last resort because Terraform cannot do this, cannot control what happens after the infrastructure is created. EC2 instance बन गया, उसके बाद जो भी होगा, it's not under the Terraform. That's why the next tool come, which is the Ansible, जो हम next video में पढ़ने वाले हैं. See, its notes are already ready for you. I'm ready for the next video. Ansible one shot. My notes. Let me download it. Ansible. When I studied it, it was Sir's favorite tool. So you can imagine how powerful it is. It's for configuration management, configuration automation, infrastructure provisioning, YAML based, and so much more. अब ये मेरे सर का भी फेवरेट टूल था तो कुछ क्रेजी तो होगा. So we'll understand that in the next video. Basically used for initial configurations and backend push. हमारे सारे फाइल्स रिमेन्स इन द लोकल मशीन, उसका कोई बैकअप नहीं होता. If we destroy it, everything is deleted. So we have to keep a track of it. That's why a backend.tf is used so that it stores our this file. Where is it? Yeah, tf.tf state. Basically, the entire state, see, as we destroy it, everything is deleted. So it Terraform automatically updates the tf.state file and see that backup is created so that nothing is lost. That's how powerful Terraform is. So we have to push it to S3 so that data is not lost, ever lost. That's why we have the backend.tf file, which you already learned. And with this, Terraform is completed. Now you know Terraform. We just saw its magic with the help of 4 commands and inbuilt modules. We can do some crazy things. So congratulations. Now you know Terraform. You can confidently say you know Terraform, but practice करनी पड़ेगी. And जब इसकी वजह से आपका कोई बड़ा पैकेज लगेगा तो अपने भाई को एक थैंक यू बोल देना भाई. So yeah, this was it. Now let us see the initial setup, how to set up Terraform, how to set up AWS account, how to connect everything, and see you in the next one. It's about Ansible. मजा आने वाला है. See you in the next one. Over and out. Okay, then let us set up Terraform, for which we have to install Chocolatey. Chocolatey क्या? It's a package manager जो हमारा काम बहुत easy कर देता है. By just to install tools like Terraform, Ansible, configure AWS, सब is managed with the help of Chocolatey. देखो इंस्टॉलेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? दैट वी हैव टू सेट अप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और वो सब. फॉर विच Chocolatey मेक्स द एंटायर प्रोसेस वेरी सिंपल. सो लेट अस सेट अप. आपके लिए पूरी गाइड बना दी है. ये सब मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे से लिया है. जस्ट कॉपी पेस्ट एंड ऑल सेट. लेट्स ओपन द पावर सेल एज एडमिन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, फर्स्ट स्टेप डन. गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, कॉपी पेस्ट, रिस्ट्रिक्टेड. सी वी हैव टू सेट इज एज ऑल सेंड क्योंकि Chocolatey बेसिकली एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए इट रिक्वायर्स दिस पॉलिसी परमिशन. नाउ लेट्स चेक इट अगेन. All signed. Okay. Now let's install Chocolatey. Just copy and paste this command. Let us do its job. Okay, it's done. Let's open it again and check whether it's installed or not. Choco. Yeah, Choco is installed. Now, see, कितना simple हो जाता है with the help of Chocolatey. Now let us set up Terraform using Chocolatey. Very simple. सिर्फ एक ही command use करो and it's done. Choco install Terraform.
Do you want me to run the script? Yes. Okay, then Terraform is installed. Let's check it. Terraform. Yeah, as it's showing, it's installed. Congratulations. Step 0 is done. Now let us learn Terraform. मजा आएगा. Now Terraform is installed. Chocolatey is installed. So now let us set up the AWS account in which, see, it's a long process and मैंने एक बार बना दिया है, so I cannot show you the entire process, but it's very simple. AWS console login. Go to this official website. Create an account. And उसके बाद these are the steps. I have provided in the notes section how to set up AWS account. Enter your email. Verify your email. Username for password. Enter your personal details. We have to set up the payment. आपको अपनी UPI ID देनी है. 15,000 auto pay would be provided to you to accept it, authorize it. But don't worry, we are we are never going to spend a single rupee on it because we will always stay in the free tier. और अगर कुछ spend करना भी होगा तो मैं कर दूंगा, so that आप सीख जाओ कि project execute कैसे होता है. Verify yourself by giving a PAN card and its PDF. Verify your phone number and all set. Welcome to AWS. मतलब इतनी complex process क्यों है? Just imagine, AWS पे Zomato चलता है, Netflix चलता है, लाखों करोड़ों की transaction होती है on AWS. So they have to make it secure. That's why you have to provide your PAN card and everything. But it's a single step process. फिर जब हम AWS सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा. So it's totally worth it. Okay. So set up the AWS account. We did this. ये भी मैंने दे दिया है नोट सेक्शन में. अब चॉकलेट इंस्टॉल है ना तो हमारा काम बहुत ईजी हो गया. We have installed Terraform. Chocolatey हो गया. We have set up the AWS account. Next step is configuration. Connecting our local machine to AWS account. So for this we require the AWS CLI. AWS CLI क्या है? It's a terminal. जैसे हमारा ये terminal होता है. CLI का मतलब ये होता है a terminal that helps us to communicate a local machine to AWS account, AWS के servers. So it's very simple. Just as we have Chocolatey installed, Choco install AWS CLI -y or AWS CLI would be installed. Now, wait a minute. Yeah. Now, how to connect your local machine to AWS account with the help of AWS configure command. As I already did this, I cannot show you again. So, for which you require an access key, a secret access key, and a default region. ये सब क्या है? Basically, it's for protection. कि आप ही सिर्फ use कर सको and it's very sensitive. You should never show your access key and secret access key to anyone. As soon as my lecture is over, I am going to delete all this because you have seen my secret access key. इससे होता क्या है? You can access my account, which is very crazy. और security reasons की वजह से it's unethical. So never show this to anyone publicly. So let us create an access key for you, for which you have to go to in the IAM section and create a user. Create user. Suppose your name is Ram. Okay, next. Attach policy directly. Give the administrator access. Administrator access का मतलब क्या है कि you have given the full access to AWS with the help of this policy. Next. आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब क्या क्या है भाई, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? बट दिस इज व्हाट मेक्स AWS सो सिक्योर कि नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, जोमेटो आर यूजिंग दिस. क्रिएट यूजर. What happened? Okay, let me give it some name. Okay, capital letters are not allowed. Ram08. Next. Next. Create user. Okay, the user is created. In the user, let us create an access key. Create access key for CLI. I understand about recommendations. Create the access key. See, here is the access key. Download it, and you have your own access key now. VS Code just once. This is your access key. With the help of use the AWS configure, give the access key ID, then the secret key access ID. As we are default region, we will be in the Mumbai AB South 1, and default output format is JSON. But just click enter, and your PC will be connected to AWS account. Now you can do some crazy things, just like we did here. कि हमने with the help of Terraform we created an entire infrastructure. If you want to check connect हुआ है कि नहीं, then you can do this with the help of this AWS STS get caller identity, and all set. Now you have installed Terraform, Chocolatey, AWS, and you have connected your PC to AWS. It's a one-time process. I know it's a little lengthy and complex, but it's a one-time process. If you have done this, then we can achieve something extraordinary. So this was it for this video. See you in the next one. And civil सीखेंगे, मजा आएगा. Over and out.